रॉकेट सुनिश्चित किया जा चुका है। पावर ऑन कर सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। यह काम प्रमोशन मंच से सुदूर स्थल पर L110 स्वचालित तकनीक से तथा क्रायो सुरक्षा क्रायोजेनिक चरण पर संपूर्ण किया जाता है। ईंधन का भराव सुनिश्चित किया जा चुका है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर यहाँ व्यूअर्स गैलरी का यह काम प्रमोशन दृश्य देख रहे हैं। स्थल पर पूर्ण स्वचालित भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। साथ संपूर्ण किया रोमांचक दृश्य को देखने के लिए आप अभी अपनी स्क्रीन पर यहाँ के अनुसार गैलरी का पूरी तरह सामान्य दृश्य देख रहे हैं। अनुकूल है इस प्रमोशन के लिए। भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए। अब मौसम विभाग के अनुसार है मौसम पूरी तरह सामान्य अनुकूल है इस प्रमोशन के लिए। We bring to you a small clipping of the integration video for the LVM-3 rocket. Integration video. Minus 25 minutes. On your TV screens, you are watching the visuals. We bring to you second vehicle assembly integration video for the LVM-3 rocket. LVM-3 M4 rocket has been assembled. These are the strap on your TV screens. You are watching the visuals getting assembled. Second vehicle assembly building, where the full each LVM-3 M4 rocket has been assembled. Called nozzle in segment, strap on, middle segment, and head in segment. Boosters getting assembled. Segment by segment. Nozzle is assembled. And each one after the other has got 3 segments are joined together. Nozzle in segment, middle segment, fully assembled solid rocket booster is to which the nozzle is assembled with a crane and being lowered on to the mobile launch pedestal as an integrated are joined together. The igniter assembly then takes place. Fully assembled solid rocket booster is strap-on handled carefully with a crane and being lowered on to the mobile launch pedestal as an integrated rocket. The core L110 assembly then takes place stage, and this is being brought to the second vehicle assembly building for tilting and assembly on your TV screen. The S200 it is the core L110 stage. जी हाँ, अभी आपने देखा दोनों S200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स के साथ L110 को भी संलग्न कर दिया गया है और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज CH25 कहा जाता है इसे। जी हाँ, अभी आपने देखा दोनों S200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स के साथ L110 को भी संलग्न कर दिया गया है और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज। पूरी दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह है कहा जाता है इसे जो कि दिमाग है जटिल इंजन है ये C20 इंजन और यह है बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रोपल्शन मॉड्यूल। पूरी दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह है इक्विपमेंट बे जो कि दिमाग है इस रॉकेट का और यह है हमारा चंद्रयान 2 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में काफी सुधार किए गए हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये 758 वॉट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स चंद्रयान 2 के पश्चात इसमें काफी सुधार किए गए हैं। SHAR 192 confirm 758 वॉट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं लैंडर और रोवर को। ये रोवर है जो चंद्रमा में थ्रस्टर से चरण करेगा। और पूरी सावधानी के साथ आप देख रहे हैं इसे संयोजित कर दिया जाता है लैंडर और रोवर को। ये रोवर है जो चंद्रमा लैंडर मॉड्यूल रोवर के साथ अब इस लैंडर मॉड्यूल सावधानी के साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल संयोजित कर दिया जा रहा है और यह लैंडर मॉड्यूल रोवर के साथ request all stations change over to channel 2 at T- अब इस लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ संयोजित कर दिया जा रहा है। पश्चात -22 minutes इस समुच्चय को request all stations change over to channel 2 पेलोड फेयरिंग के अंदर सुरक्षित कर दिया जा रहा है। no confirmation सभी परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात पेलोड एडेप्टर अंतरिक्ष यान और पेलोड फेयरिंग समुच्चय को इन सभी के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहते हैं के अंदर अब इसे सुरक्षित कर दिया जा रहा है और क्रेन की मदद से इसे पेलोड एडेप्टर क्रायो स्टेज के ऊपर संयोजित किया जा रहा है। इन सभी के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहते हैं। अब इसे व्हीकल तैयार बिल्डिंग लाया जा रहा है LVM-3 M4 रॉकेट और क्रेन की मदद से व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से निकलकर स्टेज के ऊपर संयोजित किया लॉन्च पैड की ओर जा रहा है।
इसे मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर रखकर तैयार करीब LVM-3 M4 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से निकलकर लॉन्च पैड की ओर जा रहा है। इसे मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर रखकर करीब 21 minutes. 1 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। पूर्वक लॉन्च पैड ले आया गया है और बाकी की स्वास्थ्य जांच यहां से पूरी की जाएगी। पूर्ण संयोजित और तैयार पूर्वक लॉन्च पैड ले आया गया है। आगे की जांच और बाकी की तरल नोदक का स्वास्थ्य जांच यहां से पूरी किया जाता है। The LVM-3 संयोजित और M4 तैयार rocket LVM-3 standing M4 majestically against a picturesque आगे की background जांच in the तथा second launch pad. तरल नोदक का भराव यहां संपन्न किया जाता है। LVM-3 rocket will fly for the 7th launch today. LVM-3 43.5 meters tall and standing majestically against a picturesque background. Launch vehicle has been operationalized after an experimental and 2 developmental missions. LVM-3 rocket will fly for the 7th launch today. Mission executives on your screen. Meters tall and the spacecraft director heavy launch vehicle has been operationalized after an experimental and 2 developmental missions. Mission executives on your screen. That's the spacecraft director. Control to note event number 4. LVM-3 is India's largest and heaviest launch vehicle, ferrying Indian and international customer satellites. Vehicle director to mission director. LVM-3 is India's largest and heaviest launch vehicle, ferrying Indian and international customer satellites. Mission director to अब हम उड़ान से 19 मिनट 12 सेकंड की दूरी पर normal and cleared for launch. LVM-3 M4 launch vehicle is ready for the Chandrayaan-3 mission. ROD to mission director. Range is ready for LVM-3 M4 Chandrayaan-3 अब launch. हम उड़ान से 19 मिनट 12 सेकंड की दूरी पर Health is normal and cleared for launch. Mission director Roger. ROD to mission director. Range is ready for रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड डायरेक्टर, सैटेलाइट डायरेक्टर और व्हीकल डायरेक्टर अपने तंत्रों की जानकारी मिशन डायरेक्टर को देते हैं। All necessary clearances are obtained for the launch of रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड डायरेक्टर, सैटेलाइट डायरेक्टर और व्हीकल डायरेक्टर अपने तंत्रों की जानकारी मिशन डायरेक्टर को देते हैं। launch of LVM-3 M4 Chandrayaan-3 mission based on the readiness of vehicle systems, range, spacecraft and TTC mission confirmed by respective mission executives and the already given prevailing favorable weather conditions. Mission director hereby authorizes for the launch operation sequence of launch of LVM-3 M4 Chandrayaan-3 mission at 14 hours 35 minutes 17 seconds Indian Standard favorable weather conditions. The mission director hereby authorizes second launch operation sequence of launch of LVM-3 M4 Chandrayaan-3 mission at 14 hours 35 minutes 17 seconds Indian Standard Time. Today, the 14th July 2023 जी हाँ, अभी आपने from घोषणा second launch सुनी। pad of मिशन SDSC डायरेक्टर SHAR. ने इस लॉन्च के लिए ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है। इसके पश्चात व्हीकल डायरेक्टर launch. ALS ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू घोषणा सुनी। मिशन डायरेक्टर ने On इस your लॉन्च के screens, लिए you have just ऑटोमेटिक लॉन्च watched सीक्वेंस Mission शुरू Director करने का Shri अनुमोदन Mohan दे दिया है। Kumar being इसके clearance पश्चात for the व्हीकल initiation of डायरेक्टर automatic launch sequence. ALS This is based on the ऑटोमेटिक लॉन्च confirmation सीक्वेंस of शुरू करेंगे। readiness of all participating team for On range your launch screens, vehicles, you have just spacecraft watched Mission and Director tracking. Shri Mohan Kumar The automatic being launch clearance sequence for is the scheduled to initiation of begin automatic at launch T sequence. minus 14 minutes. This is based 30 on the seconds. confirmation of As a part readiness of which of all the participating most team critical for control range system launch elements vehicles are checked spacecraft and for the tracking. launch vehicle. Minus The 17 automatic minutes. launch sequence is scheduled Very to close begin to the launch at time, T minus control will be 14 passed on to the 30 onboard seconds. As a computer. part of which LCC the most critical control to system elements are checked. timing व्यूअर्स control गैलरी launch दर्शकों से vehicle. खचाखच Minus भरी हुई 17 minutes. VLCC Roger. Very close to the launch time, बहुत भारी control संख्या will में be यहाँ passed on लोग to the उपस्थित हुए onboard हैं। आप computer. सभी का हार्दिक स्वागत है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। Timing व्यूअर्स confirmed गैलरी with दर्शकों excellent से full खचाखच भरी हुई। VLCC Roger. Enthusiastic viewers from बहुत all भारी across the संख्या में country यहाँ लोग gathering at उपस्थित हुए Satish हैं। Dhawan आप Space सभी Center का हार्दिक launch view स्वागत है gallery for सतीश धवन witnessing अंतरिक्ष this केंद्र historic में। moment Data of loggers Chandrayaan-3 Sharon and launch. SHAR 2 stations. Copied. Enthusiastic viewers from all across the country gathering at Satish Dhawan Space The Center countdown launch for view gallery LVM-3 for witnessing this M4 historic Chandrayaan-3 Data mission of loggers Chandrayaan Sharon state and SHAR for 2 stations. 25 and a half hours. Copied. It was commenced on 1:30 p.m. yesterday.
While of operation of hydrogen tank. During the countdown for launch vehicle stages are serviced with propulsion has lasted. Gas bottles for 25.5 operations are charged. Was commenced on while the Earth-storable propellant filling was concluded more than 16 hours ago. The launch vehicle stages are serviced with propellants. Gas bottles meant for stage operations are charged. While the Earth-storable propellant filling was concluded more than 16 hours ago. अब लॉन्च व्हीकल LVM-3 M4 रॉकेट अभी लॉन्च सीक्वेंस के अंतर्गत है। बोर्ड कंप्यूटर डायरेक्टर पूरी तरह स्वचालित हो चुका है, ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया है। अब यह लॉन्च व्हीकल LVM-3 M4 रॉकेट ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के अंतर्गत है। इसका मतलब ऑन बोर्ड कंप्यूटर पूरी तरह स्वचालित हो चुका है। And the day of launch, wind biasing data is fed during the countdown to the onboard computers to enable most suitable steering of the launch vehicle through atmosphere. We are very close to the launch. Up next, the day of launch, wind biasing data is fed during the countdown to the onboard computers to enable most suitable steering of the launch vehicle through atmosphere. Up next, we will watch a curtain raiser video on this mission. Moon, this familiar object in the night sky, has inspired the imagination of astronomers and ordinary people alike. From time immemorial, humans have marveled at the beauty this familiar of the object in the night sky has inspired the imagination and navigate astronomers and ordinary people in modern times. From time in the only natural satellite of the Earth have marveled at the beauty added importance due to the belief to count time is the key to our understanding of the evolution of the solar system. In modern times, in general, and the only natural satellite of the Earth has acquired added importance due to the precious resources and low gravity key to our further endeared it of the evolution of the solar system in general and Earth in particular. A major spacefaring nation, besides, has Moon's precious resources and low gravity have further endeared it to humans. The country has sent 2 robotic spacecraft into orbit the Moon, a major spacefaring nation look has conducted a Chandrayaan-1 demonstrated India's ability to reach the surface of the Moon. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the Moon, and to India became the 4th country to reach the Chandrayaan-1 demonstrated India's ability to reach the surface of Chandrayaan-1's conclusive discovery of water on the Moon. In 2009, India became the 4th country to reach the surface of the Moon in November 2008. Besides, Chandrayaan-1's conclusive discovery of water on the Moon in 2009, Vikram was praised as named Pragya. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly the follow-on mission Chandrayaan even today had an orbiter working satisfactorily called Vikram 3,900 named Pragya. Chandrayaan's 4 years, the orbiter being sent to the Moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface. Now, 3,900 kilograms of a rover. Chandrayaan, following the spacecraft launch by India to the Moon, most capable rocket of LVM-3, another focused Chandrayaan-3 lander carrying a rover within it and will be carried into an orbit around the Moon. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket, the lander will separate from that module. Chandrayaan-3 lander carrying a rover within it in the south polar region of the orbit around the Moon by the propulsion This region is of intense interest as it has a lander permanently shadowed from that module which could contain to make water ice landing pressures in the south polar region. Chandrayaan-3 lander has 4 scientific instruments. This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain, while the other water ice studies and as precious minerals. The surface of the Moon allows heat to flow. Scientific instruments or payloads. The third one will study the plasma environment near the Moon surface, while the other one studies and as fourth instrument the surface of the Moon allows scientists heat to measure the distance between the Earth and Moon. The third one will study the plasma environment near the Moon surface. The 2 instruments on the rover
help us study the composition of the moon's surface, enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately. While the lander and rover are two instruments on the rover, help us study the composition of the moon's surface modules circling the moon and will observe the light coming from Earth, the only planet, while the lander and rover will be in direct contact with each other. This observation will help the propulsion module circling the moon to observe the light coming from Earth other than the sun, the only planet which we know which is as Chandrayaan-3 undergoes important tests and years will help in understanding thousands of ISRO scientists, including those who will launch other than the sun, control it and receive the precious scientific information from it, undergoes important tests and years are readying themselves for the challenging thousands of ISRO scientists in the past, those their dedication and skill control it and receive the precious scientific from across the world using giant dish antennas. Let us wish them well for the challenging tasks ahead called Chandrayaan-3. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. Let us wish them well in this great endeavor called Chandrayaan-3. अभी आपने देखा एक संक्षिप्त वीडियो जिसमें एनिमेशन की मदद से इस पूरे मिशन आपके सामने यात्रा को बताया गया है। इसरो के अध्यक्ष श्री इस मिशन के ऑब्जेक्टिव को समझाया गया। अभी आपने देखा एक संक्षिप्त वीडियो जिसमें एनिमेशन की मदद से इस पूरे मिशन की यात्रा को बताया गया है। Chandrayaan-3 has two predecessors with destination moon as their mission objective. Chandrayaan-1, launched by PSLV C11 in October 2008, included lunar orbiter and has two predecessors during the mission life of around 10 months. Mission objective. Chandrayaan-1 had mapped the minerals on lunar surface. C11 in October 2008 images to help include lunar orbiter, 3D atlas of moon, and what's more, during the mission life of around 10 months polar region. Chandrayaan-1 had mapped the minerals on lunar launched surface by LVM-3 acquired 70,000 images to July 2019. 3D atlas of moon, lunar and orbiter, more, lander named water Vikram on moon's polar and rover named Pragyan. Chandrayaan-2, launched by LVM-3 is still providing insightful scientific information of July 2019 payloads like spectrometers, lunar orbiter, radar lander named Vikram and rover named Pragyan. The orbiter is still providing insightful scientific information through its payloads like spectrometers, synthetic aperture radar and cameras. संक्षेप में यह इस प्रकार है। सर्वप्रथम चंद्रयान-3 को LVM-3 प्रमोचक रॉकेट द्वारा पृथ्वी की चंद्रयान-3 के चंद्रमा की सतह में उतरने के इस मिशन को कुल 10 चरणों में पूरा किया जाएगा। संक्षेप में यह प्रमोचित किया जाएगा। वहां से चंद्रयान-3 को LVM-3 प्रमोचक रॉकेट द्वारा की सहायता से चंद्रयान की एलिप्टिकल पार्केट ऑर्बिट जाएगी, जो कि 170 बाय चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। चंद्रमा में प्रमोचित किया जाएगा। वहां से चंद्रयान में मैन्यूवर कर चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की सहायता से चंद्रयान कक्षा में स्थापित किया जाएगी। फिर चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर ही समय चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में मॉड्यूल से पृथक कर दिया जाएगा। फिर से मैन्यूवर कर या चंद्रमा की 100 किलोमीटर प्रोपल्शन मॉड्यूल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल आने पर लैंडर मॉड्यूल को लैंडर तथा रोवर मॉड्यूल से पृथक कर दिया जाएगा। कक्षा से या चंद्रमा की कक्षा देख पा रहे हैं, यह 100 किलोमीटर मॉड्यूल वृत्ताकार कक्षा होगी। उसमें उचित अभिवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को अपने से पृथक कर मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है लैंडर तथा रोवर को ऐसा करने के लिए इसमें एमएमएच और मॉन का प्रयोग की कक्षा में 440 की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा होगी। हुए हैं उचित अभिवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को अपने से पृथक करने आवश्यक संचार सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ऐसा करने के लिए इसमें एमएमएच और मॉन का प्रयोग कर 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स वाले इंजन लगे हुए हैं। Journey of Chandrayaan-3 to the moon. The spacecraft consists of propulsion module, lander and rover. Lander is planned to touch down at the major milestones in the journey of Chandrayaan. 10 phases of the mission are: the first, the spacecraft consists of propulsion module, lander and rover, and earthbound lander maneuver. Is planned to touch down. While the second phase is the lunar transfer phase, as the name suggests. 10 phases of the mission are: the first,
phase called the Earth-centric phase comprises 8 phases pre-launch, launch, ascent, and earthbound lunar orbit insertion, while the second phase is the lunar transfer phase. Maneuvers, as the name suggests, the Chandrayaan spacecraft moves closer to the moon. And next 8 phases are in the moon orbit. It is now that the propulsion module separates from the lunar module, followed by the moon-bound maneuvers 100 by 100 phase, which mark the fourth phase of the moon is achieved. The Chandrayaan-3 in its sixth phase carries out that the propulsion module separates from the lunar module kilometers to 100 by 30 kilometers orbit. Circular followed by the pre-landing phase as seventh phase. The Chandrayaan-3 in its sixth phase carries out landing phase takes place from 100 kilometers to 100 by 30 kilometers orbit, followed by the pre-landing phase as seventh phase, and then the most awaited landing phase takes place. मिशन नियंत्रण कक्ष का दृश्य सभी सेंटर डायरेक्टर्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा हो रहा है। आपके सामने है मिशन नियंत्रण कक्ष का दृश्य का भी इस इंतजार पे सभी सेंटर डायरेक्टर्स प्रमोशन से हम 5 मिनट पर की दूरी पर हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा हो रहा है। Most of you might recall the Chandrayaan-2 mission and the intense moments when all the enthusiastic Indians were waiting for the touchdown of the lander on the surface of Moon. Most of you might recall the Chandrayaan-2 mission and the intense moments when all the enthusiastic Indians were waiting for the touchdown of the lander on the surface of Moon. The launch view gallery with the overwhelming crowd of visitors. यहाँ बहुत उत्साहित, मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित, from the scheduled launch time. मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। We are close to 4 minutes from the scheduled launch time. Minus 4 minutes. Gaining from the heritage of Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 is upgraded in several aspects for the enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. Gaining from the heritage of Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 is upgraded in several aspects for the enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. बैटरी आवेशन पूर्ण किया जा चुका है। ऑनबोर्ड कंप्यूटर के फ्लाइट मोड, कुछ अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना जारी है। इस दौरान सभी संचार तंत्रों की स्वास्थ्य जांच, बैटरी आवेशन पूर्ण किया जा चुका है। संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना 3 मिनट की दूरी पर है। अंतिम आवेशन और यह सभी घटनाएं संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। Minus 3 minutes. अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। प्रमोशन तथा इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों S200 स्ट्रप-ऑन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। प्रमोशन तथा इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों S200 स्ट्रप-ऑन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। pre-flight pressurization of the hydrogen tank commenced. S200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि Minus 2 minutes. तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। S200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 के प्रज्वलन के पश्चात जो कि करीब 137 सेकंड पर तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time.
सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। from the scheduled launch पूरे time. भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। इस यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। -1 minute. इस यादगार पल के लिए यहाँ हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर -45 seconds. -50 seconds. All sequences armed. -1 minute. -45 seconds. All अब हम served उड़ान armed. से 1 मिनट की दूरी पर -45 seconds. -40 seconds. L110 VHPP open. -50 seconds. All sequences are -30 open. seconds. Is ready. -45 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -40 seconds. L110 -20 VHPP open. seconds. L110 VSPP open. MOV 79 -35 open. seconds. -20 seconds. -30 seconds. Real-time -15. programs activated. -25 seconds. L110 10. VSPP open. 9, 8, 7, -20 seconds. 5, 4, 3, 2, -15, 1, 0, 10, 9, 8, 5 seconds, 7, Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of भीम LVM-3 का M4 rocket आसमान carrying को India's चीरते हुए prestigious अपनी Chandrayaan-3 भयानक दहाड़ से spacecraft. चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। प्रज्वलन और महसूस कर सकते हैं LVM और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। यह भीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। चंद्रयान-3 से हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। Every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. चंद्रयान-3 Every की चंद्रमा Indian की यात्रा witnessing the प्रारंभ हो launch चुकी live है। is content with the feeling as the rocket is soaring history in the clear skies. Every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch चंद्रमा की live is सतह पर content अपना with the छाप छोड़ने के लिए feeling watching चंद्रयान-3 history अपने in the मिशन को making. पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट चंद्रमा की ओर बढ़ रहे हैं। छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। simultaneously generating a peak thrust of वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान They are made of निष्पादन करते HTP हुए capable अपनी solid निर्दिष्ट propellant. कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। 204.5 tons in each S200 motors thrusting simultaneously tons of propellant being burnt each second. Close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB based solid S-200 propellant. स्टेप ऑन बूस्टर्स का 204.5 tons in each प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है Close to 2 tons of और propellant being अभी अभी burnt घोषणा each की गई second. L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का Apart from the strap-ons, प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है the stage has और also अभी अभी commenced घोषणा its की गई operation. L110 The stage based स्टेज on का भी प्रज्वलन combination शुरू हो चुका है। Stages are separated. of hypergolic apart from the Stage strap-on storable liquid liquid propellants. initiated. UH-25 stage has also commenced its operation. Now the stage based on combination 200 stages are separated. घटनाक्रम के अनुसार hypergolic यह यान Earth storable liquid propellants इस यान से S-200 स्टेप ऑन and बूस्टर्स को N204. सफलतापूर्वक पृथक कर Now दिया the गया है। S-200s have been यह separated. काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। घटनाक्रम के अनुसार यह यान इसके बाद L110 ये इस यान से S-200 और स्टेप ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। निष्पादन करता हुआ यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन गाइडेंस के अंतर्गत चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। The trajectory of launch vehicle is closely following क्लोज the लूप prediction. गाइडेंस के अंतर्गत है। L1 payload fairing separated. Normal. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से क्योंकि The trajectory यान of launch vehicle is closely following the 114.8 prediction. किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। Payload fairing separated.
इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकंड होता है। कर दिया गया है यान से, यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। Past the launch time, current altitude is इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। The L-110 stage carries the rocket up to 175.5 current altitude is 130 and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. The 200 seconds of its operation, the L-110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण 250 kilometers every पूर्णतः minute. सामान्य निष्पादन करते हुए L110 stage performance इस चरण में कुल normal. 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 Ignition is authorized. अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। plus 5 minutes. Cryo stage ignition is authorized. L110 stage thrust cut off अगला and चरण separated. C-25 का प्रज्वलन C-25 भावी ignition है। command. Plus 5 25 minutes. ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its Thrust cut operation. off The and C-25 stage separated. has been ignited. C-25 ignition जी हाँ, command. एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया मिशन और That's a इसके piece of प्रज्वलन really के good साथ news ही that the तालियों की third गड़गड़ाहट stage से has गूंज उठा started है its मिशन operation. The नियंत्रण कक्ष। C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन वर्तमान में इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है। सामान्य नियंत्रण कक्ष पूर्णतः सामान्य है। तृतीय चरण 118 C-25 kilonewtons thrust in वर्तमान vacuum में is what the stage प्रणोद उत्पन्न develops कर रहा है। with its 28.6 पूर्णतः tons सामान्य सभी propellant तंत्र पूर्णतः combination सामान्य है। of liquid hydrogen and liquid oxygen. 118 kilonewtons present Cryo altitude stage is what the performance stage normal. develops with its 28.6 tons propellant combination. तृतीय और यह अंतिम Of चरण है इस liquid यान का hydrogen and liquid C-25। oxygen. यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड Present हाइड्रोजन altitude और is ऑक्सीजन का performance इस्तेमाल होता normal. है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। और यह अंतिम चरण है इस यान का 186 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। सावधानी के साथ भरा जाता है। क्रायो ईंधन इस चरण में 186 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का Currently, विशिष्ट the आवेग rocket is at an altitude 446 of सेकंड के 210 करीब होता है। kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage आइए performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। Cryo stage आइए performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides India's propulsion prestigious for lunar Earthbound landing maneuvers, spacecraft Chandrayaan-3 trans-lunar moving injection, closer to its and intended moonbound in the orbit. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements. The propulsion of Earth module and lunar provides orbit. propulsion for The Earthbound abbreviated maneuvers name of the payload is trans-lunar injection and moonbound orbits.
It also has a payload to study the payloads of the lander module, the measurements of Earth and lunar orbit. Probe called the abbreviated name to measure the near surface plasma density, that is the density of ions and electrons. And its among the payloads of the lander module, the following are included. The second payload is Chandra's surface called Rambha thermophysical to measure the near surface to measure plasma density, thermal properties that is the density of ions and electrons. And its changes to measure the seismicity around the landing site. Payload is Chandra's surface, the structure of the lunar thermophysical experiment or payload to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. The rover, after its descent, to measure the seismicity around the landing site and its own payloads. The structure of the lunar better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface. LIBS or the rover, after its descent, will further the scientific study of another payload its own is the alpha particle X-ray for better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface. लैंडर मॉड्यूल में LIBS or 3 laser पेलोड हैं, induced रोवर breakdown में 2 spectroscope is और propulsion included. मॉड्यूल में Another 1 payload is the भेजा alpha गया है। particle X-ray spectrometer. चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर लैंडर मॉड्यूल में का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह रोवर में अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे भेजा गया है। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की ऊबड़-खाबड़ सतह में स्वदेशी लैंडर और रोवर से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने किया जा रहा है। यह और संचारग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की और रोवर में सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए ऑफ मून और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है। चंद्रयान 3 के यह चंद्रमा और रोवर में के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव सरफेस एंड एटमॉस्फेयर थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट शॉर्ट में रंभा कहा जाता है। के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, इसके बाद चंद्र सरफेस के क्षेत्र में थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंटों का पता लगाएगा। चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड सिस्मिक एक्टिविटी अल्फा पार्टिकल के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता किया जा रहा है। रोवर में चंद्रमा की बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्माण विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप हैबिटेबल प्लैनेट अल्फा पार्टिकल चंद्रमा से स्पेक्ट्रोस्कोप पृथ्वी से परावर्तित किया जा रहा है। इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है। शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। Enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity in the aspects of the enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. The lander legs are designed to be robust enough will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of the landing of less than and enable intelligent decision making from a height choice of best location to land. The lander legs are designed and robust enough to survive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing to determine enable intelligent decision making and vertical velocity of best location in real time, avoiding craters and boulders on laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan 3 will also enable the craft to determine it helps to determine instantaneous and vertical velocity of craft in real time. Insights into the behavior of laser Doppler velocity in the last few minutes of its Chandrayaan 3 over has revealed to the scientists the necessity for determining the instantaneous velocity of craft. Inputs from various sensors are used by the autonomous into the behavior of Chandrayaan algorithm in the last Chandrayaan minutes of its descent. Plan the flight has revealed to the most suitable landing spot. The necessity for upgrade in the guidance algorithm. Engines of Chandrayaan 3 are capable of sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan 3 to plan the flight path
to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan-3 are capable of more gradual वर्तमान throttling में also. हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा। वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर 950 सेकंड चंद्रयान-3 को तृतीय चरण से क्रायोजेनिक पृथक कर दिया जाएगा, शट ऑफ कर दिया जाएगा। चंद्रयान-3 को LVM-3 M4 द्वारा इलिप्टिकल अभिवृत्ति प्राप्त कर चंद्रयान लॉन्च करने के पश्चात को 170 किलोमीटर की पृथक कर दिया जाएगा। पर क्रमशः 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा। चंद्रयान-3 को 5वीं बार में यह द्वारा इलिप्टिकल पार्किंग पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान लॉन्च करने के पश्चात ल्यूनर ट्रांसफर 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा। 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा में यह फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रस्थान मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। plus 15 minutes. We have come close to 900 seconds, close to 900